Hello, today is the new topic. I'm starting from our 10th class. This topic name is electricity. So I am starting from here, basic of electricity. Yes or no? और flowing in the basic of electricity ये हम ये जानेंगे कि चार्ज क्या है, करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वन बाय वन। और उससे पहले थोड़ा ये जानने की कोशिश करेंगे मेटेलिक की प्रॉपर्टी, बिकॉज यू नो for flowing the current, you are flowing the charge, you need a conductor. Conductor nothing but a material. Yes or no? So I am starting from some basic property from the material. Everybody know the material have three types. What? Conductor, semiconductor or insulator. कंडक्टर जिसे पर करंट पास कर सकती है या करंट फ्लो करता है, करंट कैन फ्लो इजीली. सेमीकंडक्टर कैन नॉट फ्लो इजीली. इंसुलेटर करंट इज नॉट फ्लो. So what is the significance of conductor, semiconductor, insulator? After that you know explain what is the charge, then I go what is the current, and then after go potential, again Ohm's law, etc. Okay, so you know materials. How many types of material in point of view of electricity? Three types. First, second, and third. First is conductor. What? Conductor. Second is semi-conductor. Third is what? Insulator. Yes or not? Conductor conduct the current. Semiconductor semi-conducting the current. Insulator does not conduct any charge or any current. It's called insulator. And before starting the conductor, semiconductor, insulator, I will want to explain some basic property. Conductor conductivity is high. Semiconductor conductivity compared to conductor low. Insulator compared to semiconductor low. माने सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? कंडक्टर की, उसके बाद सेमीकंडक्टर, उसके बाद इंसुलेटर का. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टर जो बॉन्डिंग करता है वो क्या करता है? इसके बीच मेटेलिक बॉन्डिंग. यहाँ पर होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग, यहाँ पर होता है आयनिक बॉन्डिंग. सबसे पहले इन लोग चीजों को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मटेरियल के बारे में जानते हैं. मटेरियल या मैटर मेड फ्रॉम molecules made from what? Atom. What? Atom. कई एटम मिलके एक मॉलिक्यूल्स बनाता है, कई मॉलिक्यूल्स मिलके एक मैटर बनाता है. यस और नो? और अगेन देखेंगे एक एटम थ्री टाइप होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ये देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में. सो आई एम ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट फर्स्ट सेमीकंडक्टर, conductor and insulator, some basic property. If you ask the bonding inside the conductor is what? Metallic. In the semiconductor, covalent. In the insulator, ionic
बॉन्डिंग। इसके बाद क्या करेंगे कि कंडक्टर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, सेमीकंडक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इंसुलेटर पर क्या पड़ता है। कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, इसमें बेसिक आइडिया हम दे रहे हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट मेटेलिक जो होता है वो पॉजिटिव होगा, ये दोनों निगेटिव होता है। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यस और नो। फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, हाउ कैन राइट, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन sharing the electron, here no free electron, नो फ्री इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। हमने ये देखा टेम्परेचर देखा, इसके बाद हमने क्या देखा, इसकी बॉन्डिंग, इसके आयनों के बीच, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच, यानी इनसाइड द बॉन्डिंग कैसा होता है। कंडक्टर में मेटेलिक बोलेंगे, सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बोलेंगे, इसमें आयनिक बोलेंगे। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें, ये पॉजिटिवली होता है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, टेम्परेचर बढ़ने से इसमें जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ता है, ऑपोजिशन यहाँ पर निगेटिव, यानी ये टेम्परेचर के इनवर्सली होते हैं। अगेन द वन प्रोसेस इलेक्ट्रॉन वोल्ट या एनर्जी गैप, एनर्जी गैप क्या होता है, गैप द बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप क्या होता है, तो कंडक्टर में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सेमीकंडक्टर में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या सम रिटर्न 1.1 electron volt, here greater than the 6 electron volt, yes or no, yes। the resistivity property देखेंगे, जब भी एक कंडक्टर होगा, कंडक्टिंग करेगा करंट या चार्ज को, तो इसकी रेजिस्टिविटी वेरी लो होगा, 10⁻⁸ ओम मीटर। इसका 10⁻³ से कितना होगा, यहाँ 10⁻³ से, यानी इसके रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, 10⁻⁴ टू 10⁻³ ओम मीटर। अब आयन के कितना होगा, 10⁻12 ओम मीटर। These are basic property. As a brief explain about before explaining the charge, the atomic structure, some basic property of metal, because I have taken the next slot conductor, and everything I explain about conductor, not about semiconductor and insulator. But you know but you know about everything, the basic one, the valence electron, valence electron nothing but outermost orbit electron, here less than 4, here equal to 4, here the greater 4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके लेस देन 4, जिसकी वैलेंसी लेस देन 4 होगा वो कंडक्टर होगा, जिसकी वैलेंसी 4 होगा वो सेमीकंडक्टर होगा, जिसकी वैलेंसी क्या ज्यादा 4 से ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। आप वैलेंस के आधार पर भी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर कैन यू फाइंड इजीली। इफ यू valence electron value less than the 4, that you consider as a what, conductor. If valence electron value is 4, you consider the semiconductor. If the valence electron greater than the 4, yes, the greater than the 4 you consider as a insulator। screenshot ले लीजिए, okay। And some example कंडक्टर में होगा कॉपर,
सिल्वर, गोल्ड, ईटीसी। इसका होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम। इंसुलेटर का होगा वुड और पेपर, ईटीसी। आप कभी किसी लकड़ी के पर करंट को फ्लो करा सकते हैं, पोटेंशियल या वोल्टेज अप्लाई करके। सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसकी एटॉमिक नंबर 14, इसका 32 होता है। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। मोस्ट कंडक्टिविटी इज मोर और सिल्वर। So I may explain only the basic property. Material have a view of electricity three types: conductor, semiconductor and insulator. कंडक्टर में कौन से? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ईटीसी। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम, ईटीसी। ये ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट in periodic table also you can see. The wood, paper, etc. are insulator. We sometimes ask what is the bonding between the conductor material inside the metallic, covalent, ionic bonding. Ionic bonding very strong bonding. You cannot remove any electron or defect the electron outermost. टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा, यानी इसकी टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से? ये पॉजिटिव है तो डायरेक्टली होगा, नेगेटिव है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। एनर्जी गैप, दिस गैप बिटवीन नथिंग बट वैलेंस बॉन्ड band and conduction band between. In the conductor case, both band are overlap. So here the energy gap between valence band and conduction band is 0 electron volt. In the semiconductor, some gap are present between the conduction band and valence band. So here not the energy gap is 0 electron volt. Here sometimes written 2 electron volt, here 1.1 minimum. But the insulator, no any charge flow, no any current flow. So the energy gap between conduction band and valence band are 6 electron volt. Resistivity, conductor less resist करेगा, so 10 to power 8 ओम मीटर। ये आगे समझेंगे कि ओम मीटर कैसे आता है। 10 to power 4 to 10 to power 3 ओम मीटर and 10 to 12 ओम मीटर। High resistivity which contains insulator, high conductivity which contains conductor, and the valence के आधार पर आप how can find if valence of electron are given, you find easily it is conductor, it is insulator, it is a semiconductor. If valence electron value less than the 4, you will consider as a this material, that matter, substance is a conductor. If the valence electron value is 4, will be considered as semiconductor. If valence electron value is greater than the 4, you will consider insulator. So now we explain after that atomic structure. Because current only flow across the conductor, your syllabus only about everything the conductor. So we will consider one example. Yes or no? मैंने शुरू में बोला मटेरियल मेड फ्रॉम molecules made from atom. सपोज ये एल्युमिनियम का टुकड़ा है, पीस ऑफ एल्युमिनियम, ये मटेरियल हुआ, कई मॉलिक्यूल्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स के सबसे स्मॉल पार्ट जिसको यू कैन नॉट विजुअलाइज ओपन आई, आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का अप्रोक्सीमेट 5000 या 500 के नियरली जूम कर सकता है, उसके थ्रू से एटम को देखता है। उस एटम के अंदर भी 3 चीज होता है, और क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और उस एटम के सेंटर में क्या रहता है? न्यूक्लियस। और सेंटर में न्यूक्लियस के अलावा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी रहता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या मूव करते रहता है? इलेक्ट्रॉन।
Suppose I am taking one example, material, aluminum. Atomic number is 13, atomic mass is 27, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3p3. Yes, no. First orbit, second orbit, and third orbit. 1, 2, 3. First, में in chemistry, how much maximum atom? 2. In the second, how much? 8, and third is also 8. You know now. 2, 8, 8, 18, 18, 32. In the part of the chemistry. So I briefly explain, not detail go, what is the real phenomena. The outermost electron are 3, and the outer orbit number is 3, and that is indicate the valence electron. Yes or no? The outermost electron. Suppose ये एल्युमिनियम का सेंटर है, सेंटर में क्या रहता है? सेंटर में रहेगा प्रोटॉन, सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसमें रहता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या रहता है? न्यूट्रॉन। बाहर में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। इसके आधार पर हम इसको अरेंज करेंगे इन द इनर ऑर्बिट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. It is said the whole area is considered as a only center, but not the bigger size. I will, for understanding, draw the bigger size. Okay. So here 2 electron, like here suppose, and again here 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. An outermost orbit in a last orbit of aluminum contains 3 electrons. Suppose I am considered for here. Yes or no? This electron revolving around the nucleus. Yes or no? One by one explain. The outermost electron had easily can remove, but इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होती है, इस दोनों के बीच भी एक फोर्स लगेगा. दिस फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ. दिस फोर्स फॉर दिस इलेक्ट्रॉन inner orbit, inner electron cannot what remove easily. Why? Inner electron cannot remove easily because a strong electrostatic force. What force? Electrostatic force. This is positive, this is negative, so right. Attract inside, so you cannot remove the inner electron easily. So everything explained in the electricity for why the current flowing here approach, because outermost electron you can easily remove in a small external force applied through the maybe light, through the maybe temperature, through the maybe any electromotive force, yeah, by the same. Yes, sir. You can remove and the flow form charge and the charge flow and path is circulating after current will be flow. So one things, electron are outermost, nucleus in the center,
Proton is positive charge, neutron is negative charge. Proton is heavier than compared to the electron. Proton is heavier than electron. Yes or no? How much? Electron, suppose, yes or this, yes or no? The electron, suppose here, electron mass is equal to 9.1 गुने 10 to power 3 minus 3 kg. The mass of proton is equal to 1.267 गुने how much? How much? 2.67 or other things. 1 minute. Into 10 to power 27 kg. Yes sir? No. मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन के भी बराबर होता है, यही मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है. Yes or no? So briefly about atom. Atom contains electron, proton, and neutron. So the atomic structure of the aluminum, atomic number it is indicated the atomic mass, and written electronic configuration 1s2 2s2 2p6 2p6 3p3. The outermost electron nothing but valence electron, free electron is known. The material made from molecules, molecules made from atom again categorized in three parts: electron, proton, or neutron, and center the atom present nucleus. Center of atom is called nucleus, and nucleus present the proton or neutron, and electron moving around the nucleus in outer orbit. Yes or no? Outer orbit electron easily can remove, but inner electron cannot remove easily because the strong electrostatic force are present. If you asked what is the mass of electron, you can say 9.1 into 10 minus 31 kg. Mass of proton is equal to mass of neutron 1.627 into 10 minus 27 kg. I can also find multiplying the what 1837. So I have explained some more basic property of electron, proton, and neutron. Okay. Electron, proton, and neutron. Yes or no? Mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg 1.6 1 year 2 some book written 27 kg charge what negative charge, it is a positive charge, it is a neutral. Value of charge minus 1.6 गुने 10 to the power minus 19 coulomb plus 1.6 गुने 10 to the power what coulomb minus material G. So this thing are always remember only basic for idea. Electron is negative charge, proton is positive charge, neutron is neutral, and charge value minus 1.6 into 10 to power 19 coulomb plus 1.6 into 10 to power 19 coulomb 0, and mass 9.1, and proton mass how much times 1837 times compared to the electron. One things the size of nucleus. One things also remember
the size of nucleus, what, very small as compared to the what, as compared to the साइज ऑफ एटम, मानी एटम के सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। द साइज ऑफ the size of nucleus is very small as compared to what, as compared to एटम साइज। एटम के साइज से न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। हमने क्या पढ़ा कि मेटल मेड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम एटम। एटम इज द लास्ट particles, a last size, in unit element of the material. What is the unit? Last unit element of material is atom. The atom inside also some property contains electron, proton, neutron. Electron around revolving the orbit, proton or neutron inside the center, and center is called nucleus. Yes or no? So one thing is on electron, proton, neutron. Yes. Some how can find the number of electron, proton, and neutrons? Some basic idea. Suppose aluminium 1327. It is a atomic number. It is a atomic mass. Yes or no? The number of proton is equal to number of atomic number. सपोज इसमें आपसे पूछेगा कि एल्युमिनियम में कितने प्रोटॉन हैं, हाउ कैन फाइंड इट, number of proton is equal to number of atomic number. Yes or no? Yes, number of atomic number. So what is the given aluminum atomic number? 13. So here number of proton is equal to 13. Yes or no? Now suppose one thing, number of neutron is equal to what? Atomic mass minus atomic number. Atomic mass minus atomic number. Or again, number of electron is equal to atomic number minus what? Charge. Yes or no? Always remember that things. What I am written, number of proton is equal to nothing but number of atomic number. Number of neutron nothing but atomic mass minus atomic number. Number of electron nothing but atomic number minus charge. So I am
how can find? Suppose example is same, aluminum 1327. Here the number of proton equal to how? Number of atomic number 30. Okay. Number of neutron is equal to atomic mass minus atomic number. Atomic mass is 27. Atomic number is 13. So how can find atomic mass minus atomic number? 27 minus 13. How much? 14. So the number of neutron are present inside the center of the aluminum atom. How much? 14. Now number of electron is equal to atomic number minus charge. So the if you look like explain, but you can simply written here aluminum. How much charge? Charge is 0. So the atomic number 13 minus 0. Suppose one example plus 3 or here minus 3. Find that two cases number of इलेक्ट्रॉन, ये दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे कैसे निकालेंगे? हमने क्या एक्सप्लेन किया? एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। तो इसको नंबर 1 मानते हैं, इसको 2। तो इस केस में क्या होगा? एटॉमिक नंबर तो आप जानते हैं एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। फर्स्ट पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो -3। हाउ मच? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट केस only 10. Here find how much number of the what is the value of electron या number of electron इसमें कितना होगा? तो एटॉमिक नंबर जानते हैं 13 माइनस द चार्ज, तो माइनस देंगे। चार्ज ऑल्सो हियर नेगेटिव -3। हाउ मच? 30 प्लस 3 इक्वल टू 60। In that case number of electron present is 16. In that case number of electron present 10. So always remember that formula is anywhere, any class, any place. Number of electron nothing but atomic number minus charge. If nothing will be given above, then you consider the neutral condition, and that case you consider the charge is 0. But in that condition, if you find the number of electron, not consider 0 because here written +3. So you usually can find atomic number minus charge. The atomic number is, you know, that everybody aluminum is 13, charge here plus, so -3 is equal to 10. In that case 13 minus 3 is equal to 16. Yes sir? No? Yes. So I mean everything basic about atomic structure, metal, molecules, and conductor, semiconductor, and insulator. So you want some problem on the base that theory, so you can easily understand. Yes or no? Problem. What is the diameter of atom? First formula, diameter of an atom. First option 10 to power minus 10 meter. Second 10 to power 2 meter. Third 10 to power minus 15 meter. And option number 4 10 to power 8 meter. So the diameter of an atom nothing but 10 to power 10 meter. Always remember this question. And next question, the mass of proton, dash dash dash, what's the mass of electron? Mass of
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में से लिखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 200 times second, what option is given? Equal, third, less than, and fourth option D, how much? And about 837 times. And before writing the question, I will explain the mass of proton is heavier how much times? 1837 times of electron, but the mobility of electron 2.6 times greater than the proton. That things also remember. So this, which option is here right? This is wrong. 200 is given. Not equal, I will explain. Not less than, I will also explain. So I will explain here 837 times. And the next question, the electron in the last orbit of an atom. The electron present in last orbit of an atom is called, मैंने किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए is here given. What is the given? Okay. Free electron. Option number B, bounded electron. Option number 3, valence electron. Option number 4 is given, harmonic. Harmonic electron. I will explain. The outermost of this electron nothing but free electron. Not is called better way. The valence electron. The flow of electrons, free electron. And next question, if the number of valence electron of an atom is less than, fourth question, if the number of if the number of valence electron of an atom is less than 4, what is the called? Option A, conductor. Option B, insulator. Option C, semiconductor. Option D, none. If the number of valence electron in an atom is less than 4, I will explain the property of conductor, insulator and semiconductor back. What is called conductor? If insulator में greater than 4, semiconductor में equal to 4. If the number of valence electron of an atom less than 4 is called conductor. If greater than 4 is called insulator. If equal to, then is called semiconductor. Yes or no? Last question. What? I will explain here. The 1 centimeter cube of copper at room temperature. Yeah, you can easily star mark 1 centimeter cube of copper at room temperature has, what is the 8.5 into 10 to power 23 electron.
The diameter of atom 10 to power 10 meter. The mass of proton in how much times? 1837 times of compared to the electron. Electron present in the last orbit of an atom is called valence electron. If number of valence electron of n part of an atom is less than 4, it considered as conductor. If greater than 4 is called insulator. If equal to, then semiconductor. If you somebody asked 1 centimeter cross sectional area, how much number of free electron contains? You can reply 8.5 into 10 to power 20 free electron. So the all things about basic, nothing I will explain. First, conductor, semiconductor, insulator. Yes, no. Some atomic structure and the three formula. So the what is the called conductor? Conductor have a which type bonding? Metallic bonding. Semiconductor covalent bonding. Insulator ionic bonding. Yes or no? And one thing's number of proton is equal to what? Number of atomic number. Number of neutron nothing but atomic mass minus atomic number. उसे घटा देते हैं एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को जो वैल्यू है क्या आएगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा और number of electron how can find atomic number minus charge you can find and I will explain the outermost orbit can easily move that electron is called valence some cases free electron but inner orbit electron you cannot remove easily so it is strong bonding with the nucleus because the according to Coulomb's law because very near to the nucleus if the distance is less explain in the next higher class Coulomb's law. So the force is also strong. But the outermost far away also the that consider is less force. You can remove easily by the light या temperature externally apply. Yeah, another case what some potential difference yeah another force can you apply. Yes or no? So the these things are very important. I will also find resistivity also remember. See the first lecture about electricity starting some basic and brief idea before starting the what is charge, before a current, potential difference. That terminology comes into the in that condition. So in explain before. If you next class will explain the charge, then you help that things. What is charge? What is the electron? What is the proton? Yes or no? The charge is positive, negative. One things charge. This is next class is okay. Not that it is basic.